Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivardhari. Jai Radha Madhava, Jayo Kunja Vihari, Jayo Gopi Janavallabha, Jayo Girivardhari.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare
जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधवा जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा Hare Krishna. So, a very warm welcome to all of you for today's session on the Srimad Bhagavatam. We'll start our session with the prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naran Chaiva Narottamam. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. So we are in the last part of this fifth chapter of the third canto of Srimad Bhagavatam, where we are seeing the demigods, the devatas. They are praying to Lord Krishna, Lord Vishnu, for mercy, because they know that they are created by the Lord for his pleasure. And we discussed that how demigods, they are talking of the glories of the lotus feet of Lord Krishna, that how every living entity is meant to surrender to the lotus feet of Lord Krishna, whether it is any living entity in the material world, be it the demigods or human beings. And only that is the only way by which they can become free from all miseries of this material world. So now today we'll start our discussion, the last 4 shlokas of this chapter, where we'll see what the demigods talk about, how to attain mercy of the Lord and their constitutional position. So text 48, shloka number 48 of the 5th chapter of the 3rd canto of Srimad Bhagavatam. Tatte vayam lok sisikshayadya vayanu stribhiratma bhisma sarve viyukta स्वविहार तंत्रम
न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते तत्ते वयं लोक सिसृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिस्मा सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते. Translation. O original person, we are therefore but yours only. Although we are your creatures, we are born one after another under the influence of the three modes of nature. And for this reason, we are separated in action. Therefore, after the creation, we could not act concertedly for your transcendental pleasure. You see, now the demigods, they are talking about their constitutional position, and they are saying why they have been created. Why every living entity is created is being told here by the demigods in their prayers to the Supreme Lord. So they are saying, Tatte Vayam Lok Sisrikshayadya. Sisrikshaya. Sisrikshaya means the purpose of this creation. Tvaya Anusrishta Stribhir Atma Bhisma. Anusrishta. So basically, they are created Anu. Anu means after. So they are created one after another. Just like in an ocean, we see one wave after another. Similarly, these demigods are also created like that. So, sarve vyukta swavihara tantram. And swavihar. Vihar means to pleasure. Vihar means to perform activities for pleasure. So, whose pleasure? Swavihara. Swavihar means Krishna's pleasure. So, they are all acting, they are all basically created by the Lord for the Lord's pleasure. Okay. Nashaknumastat pratihartavete. But they are not able to work like that. Although they are created to give pleasure to Krishna, but they are not able to work like that. That's what the demigods are saying here, the Devatas. That although we have been created to give pleasure to you, but we are not able to do that. So, and they are saying why they are not able to do that? Because of the three modes of material nature. So this material energy is so strong that it does not allow us to serve Krishna. It creates a barrier between us and service to Krishna. Although we may desire to serve Krishna, we may know that we have to serve Krishna, but this material energy is so strong that it comes in between us and service to Krishna. So, very, very powerful, this material energy. And this is created by the Lord for those living entities who are averse to the desire of the Lord. Because one of the principle of surrenderance is to have no other desire than the desire of the Lord. But this material world energy is created for those living entities who have desired against the Lord, or those who are not acting according to the will of Krishna or the Lord. So that is, and this material energy is comprised of the three modes: Sattvagun, Rajogun, Tamogun. Mode of goodness, mode of passion, mode of ignorance. And that is why there is diversity in this material world. Someone is serving his family, someone is serving his society, someone is serving a dog, right? So that's why there is diversity in this material world. Everyone is engaged in some or the other service, whereas everyone is created to engage in service of Krishna, because we are all part and parcel of Krishna. So until unless everyone starts serving Krishna,
There cannot be any harmony in this world. Why? Because this world is created by Krishna for his pleasure. So till we work for Krishna's pleasure, there can be no harmony because everyone is engaged in some other purpose, which is not the purpose of this creation. Everyone is engaged in the purpose which is not the purpose of this creation. So everyone must engage in the activity which is the purpose of the creation. It should be in line with the purpose of creation. And the purpose of this creation is transcendental pleasure of Krishna. That is the purpose of this creation. So that's what demigods are saying here. That because we are affected by the three modes of material nature, my Lord, we are not able to serve you. Right? We are not able to serve you properly. Everyone is engaged, they want to serve Krishna, but they are not able to serve Krishna properly because of the three modes, and they are meant for living entities who are against the will of the Lord. And that is why sometimes uh, it creates an atmosphere where when we are influenced by it, we are not able to serve the Lord properly. And that is why a devotee has to surrender to Krishna, because only by surrenderance to Krishna we can rise above the three modes. And that's where devotional service begins. Devotional service, real pure devotional service begins when we rise above the three modes. And how will we rise above the three modes? Only by Krishna's mercy, only by Krishna's transcendental grace. Now text 49, shloka number 49. Yavad balim te jaharam kale yatha vayam channamadam yatra yatho bhayesham ta ime hi loka balim harantonnam adantyanuha यावत् बलिं ते जहराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यथो भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनुहाः. Translation. O unborn one, please enlighten us regarding the ways and means by which we can offer you all enjoyable grains and commodities, so that both we and other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance and can easily accumulate the necessities of life both for you and ourselves. Now you see what is mentioned here by the Devatas, the demigods. So they are saying, Yavad balim teja haram kale. Yatha vayam cha annam adam yatra. Annam. Anna means food grains. Cha annam adam yatra. Adam means to eat. So please tell us how we can offer food grains to you and then eat, which is prasadam. Yatho bhayesham ta ime hi loka. Because yatha ubhayesham. Ubhayesham beyond. Ubhayesham means beyond this material creation. Ta ime hi loka. This world is maintained by the Supreme Lord. Balim haranto nam adantyanuha. And in this way, by offering
the food grains to the Lord, people they can live in this world without any disturbance. They can eat also nicely, and while eating also they can live happily. You see. So this is the meaning of human life. Human life is meant to understand this higher consciousness, which is Krishna consciousness. Animals, they don't have this understanding that I have to offer to Krishna and then eat. They don't have any gratitude for Krishna when they eat, because they can never understand how everything is created by the Lord. Those human beings who are not able to recognize the hand of Krishna in human life, they are put into lower species of animal life. So when a person is developed in his consciousness, when a human being, he advances in his consciousness, then he is raised to the position of demigods. And when his consciousness transcends the three modes and completely is immersed in Krishna, then he transcends even this universe and he goes back to home, back to Godhead. But developed consciousness is demigod consciousness, as we can see here in these shlokas. Right? And degraded consciousness means animal consciousness. And in between is human consciousness. Degraded consciousness is animal consciousness or demonic consciousness, also you can say. Advanced consciousness means demigod consciousness. And in between is human consciousness. And transcendental consciousness means Krishna consciousness, which is, and this consciousness belongs to the devotees of Krishna. Right? So those living entities who have developed consciousness in human life, they go to upper planetary system and they become demigods. Because those living entities or those human beings who know that Krishna is Supreme Personality of Godhead and they worship Krishna whole life, they are eligible to go to upper planetary system and become demigods. Because they are perfectly aware that we are all part and parcel of Krishna. They may have some material desire, demigods, but at least they are devotees of Krishna. Right? So Krishna is the maintainer of everyone, whether it is animals or demons or human beings or demigods. Everyone is maintained by Krishna. And Krishna has planned how a person will attain his food. How a person will attain his food. Krishna has planned for everyone, whether it is animal or demons or demigods or human beings, whoever he may be, in whatever consciousness he may be, whether it is advanced consciousness or lower consciousness or degraded consciousness. Every living entity is maintained by Krishna, and it is Krishna who provides to everyone. Right? So sometimes people, they come up with new theories. Nowadays, many theories are going on in this world that people are dying out of hunger because of increase in population. But no, you see what demigods are saying here. Yavad balimte jaharam kale yatha vayam cha annam adam yatra. Demigods are saying that if we offer to you, my dear Lord, and then we accept
the remnants of food offered to you, which is prasadam. If we eat only after offering to you, then yatho bhayesham ta ime hiloka palim haranto nam adantyanuha. Then there will be no shortage and we'll live happily in this world. Demigods know that. Foolish human beings, they invent new theories that people are starving or there is scarcity of food. They think that it is because of overpopulation. Right? They think that it is because of increase in population. But that is not the case. Krishna can maintain unlimited number of living entities. Unlimited. Provided they know how to eat. Right? Annad bhavanti bhutani in the 3rd chapter of Bhagavad Gita. What does Krishna say? Annad bhavanti bhutani parjanyad anna sambhavaha. Living entities are subsisting, living entities are existing because of food grains. So who is providing food grains? Krishna. So he can provide food grains to unlimited number of people, provided people know how to offer to Krishna and then eat prasadam. But if human beings become like animals who have no gratitude for Krishna or God, and they eat food without offering to Krishna, because animals, they eat food without offering to Krishna. So human beings also, if they become like animals, then they have to live in starvation, then there will be shortage of food grains. We'll see in the next 2 shlokas, the demigods will talk about it. So human life is meant to offer food to Krishna and then eat prasadam. Because if we don't offer to Krishna, then we become sinful because things are provided by Krishna. Just like if you earn money, but you don't offer a portion of your money to the government, then you become sinful, isn't it? You are put behind, then you will be punished. Right? Similarly, whatever we are eating, if we don't offer to Krishna and then we eat, then we become sinful. And how can a sinful person be happy? So this famine or drought, it's not because of increase in population, right? It's not because of increase in population. This famine or drought is not because, or floods, they are not because of increase in population. They are because human society, when becomes godless, then all these things come because the process, this anna, this food grain is given by Krishna. And if you don't offer to Krishna, then you break the law. And then we have to be punished by scarcity or shortage. So sometimes people think that, but there are many people who are not God conscious, but they are living in opulence. Yes, they may live in opulence for some time because of their past activities, because of their past karma, they are enjoying some opulence. But if he forgets his relationship with Krishna, then that opulence will not be lasting for a long time. And this law of nature will act and he will, the moment his pious activities, the effect of pious activities dwindles away, then again his sinful reactions will take over. Because we can cheat everyone, but we cannot cheat the Lord. Lord, the laws of material nature are very stringent.
No one can surpass, no one has ever surpassed, and no one can surpass it. So that is why it's the duty of human beings to surrender to the will of the Lord and do activities exactly according to the Lord's desire. This material world is created by Him, and every living entity must abide by the order of the Lord, which we find in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. And that's why demigods, they are praying to the Lord, that Lord may give them intelligence to do that. Now text 50, shloka number 50. Tvam nah suranamasi sanvayanam kutastha adyah purushah puranah tvam deva shakyam gunakarma yono retastvajayam kavimadadhejah tvam nah suranamasi sanvayanam कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनो रेतस्त्वजायां कविमादधिजः. Translation: You are the original personal founder of all demigods and the orders of different gradations. Yet you are the oldest and are unchanged. O Lord, you have no source or superior. You have impregnated the external energy with the semina of the total living entities, yet you are unborn. Now you see what are the demigods praying to Krishna. So they are saying that Tvam nah surana masi sa anvayana, that nothing is separated from you. It is you who are creator of everyone. Suranam is demigods. So you have created us with different capacities. Different demigods are created with different, they have been entrusted with different responsibilities, and the demigods, they acknowledge this, they know this. So that's why they are saying here, Kutastha Adyah Purusha Purana, and you are the Kutastha. Kutastha means Kut Astha. Astha means, Kut means which can be changed, and Kutastha means which can never be changed. So you are changeless, you are the original. Adyah Purusha Purana, because you are the original personality. Tvam Deva Shaktyam Guna Karma Yono, and you are the source of Deva Shaktyam. All the devatas, all the empowered people, guna, karma of different living entities. You are the source of everyone. And it is you who Retastva Vajayam Kavimadadheja, and you are the person, you are the personality who impregnates this material nature with your semina. You see? So a person may say that I have my father. His father will say that such and such person is my father. Like that, we go up and up and up. Finally, there will be some father. And father of everyone is Manu. He is called as the original father of all the living entities. And Manu is born of Brahma. Lord Brahma is the father of Prajapita. He is the father of all the living entities, the original Prajapati. But who is the father of Lord Brahma? Vishnu. Now, who is the father of Vishnu? No one. So, my father, his father, his father, his father, up to Brahma. And then Brahma's father is Vishnu. But who is the father of Vishnu? No one.
So a person who has no other father, he is the greatest. There is no one equal to him and no one can be greater than him. That is God. So sometimes when he appears in the material world, he takes avatar, he accepts some living entity as his father, just to follow the rules of this material world. But he is never subordinate to anyone. It is he who chooses who will be his father. Right? Lord Narsingadev, he appeared out of pillar. So Lord can do wonderful activities, superhuman activities. Only he can do. He is the magician. So sometimes to follow the rules made by him, he accepts some living entity as his father. Some of his devotee he accepts as his father. But he is the supreme father. He is never subjected to anyone else. So however great a living entity may be, he may be Lord Brahma, he may be Indra, he may be Surya Dev, anyone, but no one can surpass the position of the Supreme Lord. He is the original personality, the source of everyone, and he is the supreme father of everyone, even up to Lord Brahma. So, and he is the supreme father of everyone, but he has no other father. He is the source of everyone, but he has no other source. That is the meaning of God, and that's what the demigods they are saying here in this shloka. Now, text 51, shloka number 51, the last shloka of this chapter. ततो वयं मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम् ततो वयं मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्. Translation. O Supreme Self, please give us, who are created in the beginning from the Mahat Tattva, the total cosmic energy, your kind directions on how we shall act. Kindly award us your perfect knowledge and potency so that we can render you service in different departments of subsequent creation. Now you see, the demigods, they are saying, Tato vayam mat pramukha yadarthe. Mat pramukha. Mat pramukha. That we all have been created by you, yad arthe, for your pleasure. We have been created by you for your pleasure. Babhuv imatman karvam kimte. And we have all been created for kimte. There is no other reason apart from this, that we have been created to serve you. Tvamna svachakshuh paridehi shaktya. And that is why we want swachakshu. We want, chakshu means we want direction from you. We are in darkness. We are not able to see anything. Please give us eyes. Please give us eyes of knowledge. Please give us direction. And shaktya, and give us shakti, give us potency, give us power, strength. So only Krishna can give strength and only Krishna can give us direction. Demigods are saying this. Devakriyarthe yadanugrahana, so that the purpose for which we have been created by you, we can fulfill. You see how beautifully demigods are praying to Krishna. They are saying that we have been created by you for some purpose. But to execute that purpose also, we need your blessing, your guidance, your mercy, strength. We require strength, and that you only can give. So to execute your will also, we require strength from you.
You see? So they know that this material world is created not for living entities. It is not created for living entities. It is created for pleasure of Krishna, for the pleasure of the Lord. All the living entities, all the living entities, they are meant to serve Krishna. They have fallen down into this material world, all the living entities, demigods, Brahma, lower living entities, animals, human beings, they all have fallen into this material world because of misuse of their independence against the will of the Lord. And that's why they have been bound into this material world. So now, how will they go back to the Lord? So, because we rejected or we disobeyed Krishna, we have come here. So, we can go back to Krishna only by obeying him again, isn't it? Very simple. So, this simple thing people don't understand. You see, such simple, so simple it is, bhakti. People don't understand. That is what the purpose of all the Vedas, that is the purpose of all the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, to make us realize our position so that we can engage in service of Krishna, which is our original constitutional position. And that's what the demigods are saying here. So the demigods, why they are praying like this to Krishna? Because they have developed consciousness. They may have material desires, and because of which they have become demigods. Just like in a prison house, some of the senior prisoners, they are given some responsibility. So this material world is like a prison house, and demigods are like senior prisoners. Why? Because they know that now this is not the goal of life. They know that we have to serve Krishna. So they have been given these positions. And that's why they act as representatives of Krishna. They manage material affairs of this material world. But even to perform service to Krishna, they require energy and power from Krishna only. They have to be enlightened by Krishna only. So to serve Krishna also, you require intelligence given by Krishna. So the sincere devotees of the Lord, they seek guidance and intelligence from Krishna, and they engage in serving Krishna only. And that's what demigods, they are saying here. They are entrusted by the Lord to perform affairs of this creation. And for performing service to the Lord, they are seeking direction from the Lord and his mercy. Right. So similarly, every human being should engage in service of Krishna. And how they will engage in Krishna's service? By the guidance of a bona fide spiritual master. Because he is the mercy representative of Krishna, a spiritual master. And under his guidance, the devotees, they engage in service of Krishna, and they get elevated in their consciousness. And that's how, at the end of their life, they can go back to Krishna. And that's what the demigods, they are saying here. So this ends the 5th chapter. This chapter, it ends here. So in the next session, we'll start with the next chapter, the 6th chapter of this 3rd canto of Srimad Bhagavatam. So you can like the video, you can comment, you can share with all your friends the link to these sessions. You can subscribe to our channel. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare हरे कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में। अब प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हमने देखा अपने पिछले सत्रों में, अब हम इस अध्याय के अंतिम 4 श्लोक आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि तीसरे स्कंद का 5वां अध्याय जो है अब इसके हम अंतिम भाग में है। और हमने देखा कि किस प्रकार जो देवता लोग हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना इस जगत में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता, और इस जगत में सुरक्षित रहने का एकमात्र मार्ग है आपके चरण कमलों का आश्रय लेना। तो उनकी प्रार्थनाएं, भले ही वो देवता लोग हैं लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे अपनी चर्चा को 48वें श्लोक से और देखेंगे कि अंतिम जो प्रार्थनाएं हैं इस अध्याय में वो देवता लोगों को वो क्या कह रहे हैं भगवान से। 48वां श्लोक तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 48वां श्लोक। तत्ते वयं लोक शुश्रूषयाद्य त्वयानुसृष्टान् त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। तत्ते वयं लोक शुश्रूषयाद्य त्वयानुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते। Translation: O original person, we are therefore but yours only. Although we are your creatures, we are born one after another under the influence of the 3 modes of material nature, and for this reason we are separated in action. Therefore, after the creation, we could not act concertedly for your transcendental pleasure. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे परम पुरुष, हम आपके ही हैं, आपके द्वारा हमारा सृजन हुआ है, लेकिन हम एक के बाद प्रकट हुए हैं, एक के बाद एक हमने जन्म लिया है इन 3 गुणों के कारण, और इसके कारण हम सामंजस्य स्थापित करके आपकी सेवा नहीं कर पा रहे। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं। तत्ते वयम लोक शुश्रूषयाद्य, आपके द्वारा हमारी रचना हुई है, आपने हमें जन्म दिया है, लेकिन त्वया अनुसृष्टा स्त्री फिर आत्मभीष्म, लेकिन ये सारी सृष्टि, सब कुछ ये जो कुछ भी आपने हमें जन्म दिया है, अनुसृष्टा, एक के बाद एक हम लोग की सृष्टि हुई है। अनु मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद एक हमारी सृष्टि हुई है। क्यों?
त्रिभिर, इन 3 गुणों के कारण। और ये सब स्वविहार तंत्र, इस सब, ये पूरी रचना जो आपने की है अपने आनंद के लिए की है, ये सब आपके आनंद के लिए है। और हमारा दायित्व है कि हम आपको आनंद दें आपकी सेवा करके। लेकिन न शक्नुम, लेकिन हम आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहे इन 3 गुणों के कारण, क्योंकि हम एक के बाद एक पैदा हुए हैं और सामंजस्य स्थापित नहीं हो रहा। अब देखिए, ये जो 3 गुण हैं, यह हमें भगवान की सेवा ठीक से नहीं करने देते। क्योंकि ये 3 गुणों से जो, ये जो 3 गुणों की प्रकृति भगवान ने जो सृष्टि की है, वो किसके लिए की है? उन लोगों के लिए की है जो भगवान से विमुख हो चुके हैं। और इसीलिए इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण मनुष्य पूर्णतः भगवान की सेवा में नहीं लग पाता। इसीलिए जब तक इन 3 गुणों को पार नहीं करेंगे, तब तक भगवान की शुद्ध, वहीं से भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। जब इन 3 गुणों को हम पार कर जाते हैं, वहीं से शुद्ध भक्ति प्रारंभ होती है। जब तक इन 3 गुणों में फंसा रहेगा मनुष्य, उसके लिए शुद्ध भक्ति बहुत मुश्किल है। और 3 गुणों में फंसे रहने के कारण मनुष्य इधर उधर तरह, अलग अलग तरह की सेवाएं करता है। कभी परिवार की, कभी समाज की, कभी देश की, कभी किसी की, कभी किसी की। जबकि इस सृष्टि की रचना किसने की है? भगवान ने। किसके लिए की है? अपने आनंद के लिए। हमारी रचना ही हुई है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन हम इन 3 गुणों के कारण इधर उधर हम सेवा करते रहते हैं, जबकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। तो जब सारे मनुष्य मिलकर भगवान की सेवा में लगेंगे, तो अपने आप इस जगत में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और वही देवी देवता लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इस इन 3 गुणों के कारण हम पूरे सामंजस्य से आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें जन्म ही आपने दिया है अपने आनंद के लिए, लेकिन हम आपको आनंद नहीं दे पा रहे, आपकी सेवा नहीं कर पा रहे इन 3 गुणों के कारण। 49वां श्लोक। यावत् बलिं तेजहराम काले, यथा वयं चान्नमदाम यत्र, यथो भयेषां त इमे हि लोका, बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः। यावत् बलिं तेजहराम काले, यथा वयं चान्नमदाम यत्र, यथो भयेषां त इमे हि लोका, बलिं हरन्तोन्नमदन्त्यनूहाः। Translation. O unborn one, please enlighten us regarding the ways and means by which we can offer you all enjoyable grains and commodities, so that both we and all other living entities in this world can maintain ourselves without disturbance and can easily accumulate the necessities of life both for you and ourselves. अब आप देखिए, इसका हम अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे अजन्मे प्रभु भगवान, कृपया हमें ज्ञान दे, हमें दिशा दिखाएं, किस प्रकार हम सारा अन्न और सारी सृष्टि में जो भी हमारा है वो सब कुछ हम आपको अर्पित कर सकें, और इस प्रकार बड़े ही बिना किसी दुख के हम इस जगत में रह सकें, और स्वयं के लिए और आपकी स्वयं को संपन्न रखते हुए आपकी सेवा कर सके। अब आप देखिए, देवता लोग यहाँ पर इस सृष्टि की रचना और किस प्रकार जो भी हमारे पास है उसे भगवान को अर्पित करने के बारे में कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं देवता लोग? यावत बलिम ते जहराम काले, किस प्रकार हम आपको सब कुछ अर्पित करें। क्या क्या? यथा वयम च अन्नम आदाम यत्र, जो अन्न है, जो
जो अन्न हम खाते हैं वो कैसे हम आपको अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में लें, इसकी दिशा हमें आप दीजिए, हमें बताइए किस तरह हम ये करें। यथो भयेशम त इमे ही लोका, क्योंकि ये लोक, ये पूरा जगत तो आपके लिए बनाया हुआ है, ये आपकी सृष्टि है, आपके लिए है। तो किस प्रकार हम आपको संतुष्ट करते हुए स्वयं का जीवन यापन कर सकें। बलिम हरंतो न मदन्त्यनुहा, और इस प्रकार हम भी अन्न खा सकें और आपको अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में वो अन्न ले सकें और बिना किसी दुख के इस जगत में रह सकें। तो आप देखिए, ये है उच्च उच्च कोटि की चेतना, जो देवताओं की चेतना, कि सब कुछ भगवान के लिए करना है। मनुष्य भी जब उच्च कोटि की चेतना में पहुंचता है तो वो भी फिर ऊपर के लोकों में देवी देवता बन जाता है। जब चेतना का पतन हो जाता है तो वो या तो दानव बनता है या जानवर बन जाता है। और जब 3 गुणों से उसकी चेतना पार कर जाती है तो वो भगवत धाम पहुंच जाता है। जब तक 3 गुणों को पार नहीं किया है, लेकिन अगर चेतना अच्छी है तो वो देवी देवता बन जाता है। तो देवता लोगों की चेतना और जानवर जानवरों की जो चेतना है या दानवों की जो चेतना है, तो देवता और दानव के बीच में जो चेतना है उसे मनुष्य चेतना कहते हैं। वो मनुष्यों की चेतना होती है। तो ऊपर के लोग जो हैं वो देवता लोग रहते हैं वहां पर, क्योंकि भले ही वहां पे ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन उनकी चेतना में उनको ये पता है कि अंततः हमें भगवान की सेवा करनी। वो कभी भगवान से विमुख नहीं होते। तो उन्हें इस बात का पूरा ज्ञान है कि हम सब अंततः भगवान के दास हैं। हम सब कृष्ण दास हैं और हमें कृष्णा की सेवा करनी है, ये उन्हें पता है। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भगवान, हम अन्न जब लें तो आपको अर्पित करके लें, इसकी हमें दिशा बताई। तो अब आप देखिए, देवताओं को पता है कि अन्न देने वाले भगवान है। नहीं तो आजकल कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अन्न नहीं मिल रहा लोगों को क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। ऐसी बकवास ज्ञान की बातें लोग करते हैं। लेकिन देवी देवताओं को पता है ऐसा नहीं, क्योंकि अन्न देने वाले तो कृष्ण है, भगवान है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो अन्न किनको मिलता है? जो भगवान के बताए हुए नियम पे चलते हैं। भगवान असंख्य जीवों को चला रहे हैं इस सृष्टि में, असंख्य जीवों को चला रहे हैं, सभी को दे रहे हैं अन्न खाने के लिए। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि कैसे खाना है। जो जानवर होते हैं वो कभी भगवान को अर्पित करके नहीं खा सकते, और इसीलिए उन्हें जानवर जैसी चेतना इसी को कहते हैं। जब मनुष्य भगवान को अर्पित करके नहीं खाता तो वो पाप खाता है, क्योंकि अन्न सब कुछ दे तो भगवान रहे हैं। जैसे सरकार है, अगर आप सरकार को इनकम टैक्स नहीं देंगे तो आप फिर अपराधी हो जाते हैं। उसी प्रकार सब कुछ हम ले भगवान से रहे हैं, लेकिन हम भगवान को यदि नहीं अर्पित करेंगे अन्न या कुछ भी, तो फिर हम अपराधी हो जाते हैं। तो मनुष्य को ये
ये मनुष्य का दायित्व है कि वो जो भी खा रहा है पहले भगवान को अर्पित करे और फिर खाए, नहीं तो वो पापी हो जाता है। और पापी मनुष्य कैसे खुश रह सकता है? वो कभी उसको सुख मिल सकता है पापी मनुष्य को? कभी नहीं। तो पाप करने के बाद, पाप, यदि हम पाप का कर्म करेंगे तो कभी सुखी नहीं रह सकते। तो ये जो सूखा और बाढ़ है, ये जनसंख्या के बढ़ने से नहीं आती। जो भूखमरी है वो जनसंख्या के बढ़ने से नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है यदि जानवर जैसे बन जाएंगे तो फिर इस तरह की चीजें होती हैं इस पृथ्वी पर, तो फिर अन्न की कमी हो जाती है। तो भले ही कोई कितना भी महान अ, धनवान व्यक्ति बन जाए, वो इसलिए बना है क्योंकि उसने पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, और उसके कारण वो हो सकते थोड़े समय तक अ, भोग विलास कर ले। लेकिन कब तक कर पाएगा? जब तक उसके वो कर्मों का प्रभाव उस पर है। लेकिन वो जब खत्म हो जाएगा तो फिर से उसका पतन होगा। तो इसीलिए भगवान के बताए बनाए हुए नियमों से कोई नहीं बच सकता आज तक, ना तो कोई बच पाया है ना कोई बच सकता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करें। जो भी खा रहे हैं पहले भगवान को अर्पित करें और फिर खाएं प्रसाद के रूप में। तो ऐसा कौन कह रहा है? देवता लोग कह रहे हैं। वो अन्न भगवान को अर्पित करके फिर खाते हैं। 50वां श्लोक। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानाम् कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेच्छः। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानाम् कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। Translation: You are the original personal founder of all the demigods and the orders of different gradations. Yet you are the oldest and are unchanged. O Lord, you have no source or superior. You have impregnated the external energy with the semina of the total living entities. Yet you are unborn. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो देवता लोग कह रहे हैं कि आप ही परम पुरुषोत्तम हैं, सभी देवता और सभी जीवों के सृजन करता हैं, और आप इसीलिए पुराण पुरुष हैं। आपका कोई भी स्रोत नहीं है और आप सबसे श्रेष्ठ हैं। और आप ही ने इस जगत को गर्भवती बनाया था जीवों से, और आप अजन्मे हैं। अब आप देखिए देवता लोग बता रहे कि भगवान का क्या पोजीशन है, क्या पद है। क्योंकि हम सब के पिता होते हैं। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, और ये सब ऊपर जाकर से कहते हैं सब सब सारे मनुष्यों के पिता है मनु। और मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पिता कौन है? भगवान विष्णु। लेकिन उनके पिता कौन है? कोई नहीं। मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, जहां पे जाके कोई पिता नहीं है वो है भगवान। वो सभी के स्रोत हैं लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं। न तो कोई उनके बराबर है, न कोई उनसे महान हो सकता है। वो है भगवान। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, त्वम न सुराणा मसी सान वयाना, कि हे प्रभु आपके कारण हम सब को आपने पैदा किया है। अलग अलग हमें शक्तियां दी हैं, देवता लोग कह रहे हैं। कूटस्थ आद्य पुरुष पुराण, और आप कूटस्थ हैं। कूटस्थ का मतलब क्या हुआ? कूटस्थ का मतलब होता है, कूटस्थ
कूट मतलब होता है जिसको जिसमें बदलाव आ जाए, कूटस्थ का मतलब जिसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। तो आप अपरिवर्तनशील हैं, पुरुष पुराणा, और आप इसलिए परम पुरुष हैं, सबसे पुराने पुरुष हैं। त्वम देव शक्त्यम गुण कर्म योनो, जितने भी देव शक्तियां और जो भी देवता हैं, जो भी गुण कर्म हैं, मनुष्य हैं, उन सब के आप योनियां, उनके स्रोत हैं। और आपके रेतस, यानी रेतस का मतलब होता है अ, वीर्य से, आपके वीर्य से सब कुछ प्रकट हुआ है सृष्टि में। इस सृष्टि को आपने वीर्य दिया है जिससे हम सब प्रकट हुए हैं। अब आप देखिए, तो सभी के स्रोत हैं भगवान, उनसे महान कोई नहीं है, उनके ऊपर कोई पिता नहीं है, वो परम पिता है सबके। लेकिन वो भी कभी कभी जब जगत में आते हैं, अवतार लेते हैं, तो किसी अपने भक्त को अपना पिता बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई उनका पिता हो सकता है, नहीं, वो सभी के पिता है। जिस प्रकार, क्योंकि इस जगत का नियम है कि सबका पिता होना है, तो वो इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन वो सभी के पिता है। सभी जीव ब्रह्मा से निकले हैं, उन्होंने सबको जन्म दिया, इसलिए वो परम प्रजापिता कहलाते हैं। लेकिन उनके भी पिता कौन है? भगवान। तो उनसे ऊपर, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मनुष्य कितना भी, जीव कितना भी महान हो जाए, भले ही वो ब्रह्मा बन जाए, या इंद्रदेव बन जाए, या सूर्य देव बन जाए, या मनु बन जाए, लेकिन कोई भी, सभी भगवान से ही प्रकट हुए हैं, सभी भगवान ने ही सबको जन्म दिया है, और सबके स्रोत भगवान ही है। और देवी देवताओं को ये पूर्णतः इसका ज्ञान है, और वही यहाँ पर वो लोग कह रहे हैं। अब हम आते हैं इस अध्याय के अंतिम श्लोक में। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते, त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। ततो वयं मत्प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन् करवाम किं ते, त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। ट्रांसलेशन, अनुवाद। O Supreme Self, please give us, who are created in the beginning from the Mahat Tattva, the total cosmic energy, your kind directions on how we shall act. Kindly award us your perfect knowledge and potency so that we can render you service in different departments of subsequent creation. अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं हिंदी में। तो देवता लोग कह रहे हैं कि हे परम पिता, परमेश्वर भगवान, कृपया करके हमें दिशा दें, क्योंकि आपने हमें प्रकट किया है, आपने हमें जन्म दिया है, उस पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। तो हमें दिशा दिखाइए कि हम कैसे कर्म को करें अपने, और वो ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए ताकि हम आपकी सेवा कर सकें, और जिसके लिए आपने हमें जन्म दिया है हम वो कर्म कर सकें आपके आनंद के लिए। अब आप देखिए, देवता लोग अब अंत में क्या कह रहे हैं। यानी ततो वयम मत प्रमुखा यद अर्थे, आपके लिए हम सब, यद अर्थे, यद अर्थे का मतलब आपके लिए हम सबका जन्म हुआ है, आपको तुष्ट करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपको आनंद देने के लिए हमारा जन्म हुआ है, आपने ही दिया है। और बभू विमात्मन करवाम किंते, लेकिन आपके ही दिशा से हम कर्म भी कर सकते हैं। त्वं नः स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या, और इसीलिए स्वचक्षु, आप हमें चक्षु, आप हमें वो दिशा दीजिए। हम सब अंधकार में हैं, आप हमें दिशा दीजिए जिसके कारण और परिदेहि शक्ति, और आप ही हमें शक्ति दीजिए, आप ही हमें ज्ञान दीजिए। देव क्रियार्थ, जिसके कारण, जिसके वजह से, जिस क्रिया के लिए आपने हमें जन्म दिया है हम वो क्रिया कर पाए। अब आप देखिए, इस जगत के सृजन के पीछे भगवान का क्या प्लान है, उनका क्या प्रयोजन है।
इस सृष्टि की रचना कृष्णा ने किसके लिए की? अपने आनंद के लिए की। और जीव का ये दायित्व है कि वो भगवान के आनंद के लिए अपना जीवन जिए। इसी में उसका आनंद भी है, चाहे वो कोई भी हो, मनुष्य हो, जानवर हो, देवता हो, सभी का यही दायित्व है। ये पूरी सृष्टि भगवान के आनंद के लिए बनी, उन्होंने स्वयं इसका सृजन किया है अपने लिए, अपने तुष्टि के लिए। तो जब मनुष्य भगवान से विमुख हो जाता है, जब उनको उनके बताए हुए दिशा वो नहीं पालन करता, तो वो इस जगत में बंध जाता है, फंस जाता है। तो भगवान से विमुख होकर, भगवान की सेवा छोड़कर हम यहाँ आते हैं, इस जगत में फंसते हैं। उसी प्रकार जब हम वापस से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो हम भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो देवता लोग जो हैं, वो परिपक्व चेतना वाले जो जीव होते हैं, वो देवता लोग, वो भी इस जगत के ही भाग हैं। ऐसा नहीं कि वो मुक्त आत्मा है, नहीं, वो भी इस जगत के ही भाग हैं। जैसे एक जेल में जो थोड़े से वरिष्ठ हो जाते हैं, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, उनको जेल में थोड़ी सी ऊंचा पद दिया जाता है कि नहीं? ताकि वो थोड़ा बहुत आ, जेल कैसे चलेगा वो चला सक, थोड़ा बहुत उसमें सहयोग करते हैं, उन्हें थोड़ी ऊंचा पद दिया जाता है, जो जेल में पुराने लोग हो जाते हैं। उसी प्रकार देवता लोग थोड़ी सी परिपक्व चेतना वाले हैं, थोड़े वरिष्ठ चेतना वाले हैं, और इसीलिए उन्हें भगवान अलग अलग, उन्हें पद दिया हुआ है इस जगत में। इसीलिए वो इस जगत में, जैसे जेल में जो वरिष्ठ, जो अपराधी हैं, वो जेल के कई सारी चीजें संभालते हैं, उसी प्रकार जो देवी देवता है, देवता लोग हैं विशेषता, वो कई सारी चीजें संभालते हैं। भगवान ने उनको ये दायित्व दे दिया है। लेकिन अब देखो, अब देवता लोगों को पता है कि भले ही हमें भगवान ने पैदा किया और हमें दायित्व दिया है, लेकिन अब देखिए अब क्या कह रहे हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं वो लोग, कि भगवान आपने हमें किसी प्रयोजन से हमें जन्म दिया है, लेकिन वो प्रयोजन में हम आपके लिए अपनी सेवा अर्पित कर सकें, उसके लिए भी ज्ञान और शक्ति आपको ही देनी पड़ेगी। तो जो भक्त होता है वो भगवान से, भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि वो सेवा भी कर पाएगा जब भगवान उसे शक्ति देंगे, उसे ज्ञान देंगे। अपने मन से या अपनी इच्छा से कोई नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते। ये देवता लोगों को पता है। आप देखिए, देवता लोगों को ये बात पूर्णतः पता है। तो कोई भी जीव इस जगत में आया है भगवान की सेवा छोड़ के, भगवान के बताए हुए नियमों का पालन न जब नहीं करते हैं, तो हमें इस जगत में आना पड़ता है। तो वापस से जब हम भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करने लगेंगे, भगवत गीता का पालन करने लगेंगे, तो वापस से भगवान के पास चले जाएंगे। तो भगवान के बताए हुए निर्देशों का पालन जब हमें गुरु के निगरानी में करते हैं, तो हम वापस से, हमारा जो ये जगत में जो वास है वो अंत हो जाता है, और हम वापस से भगवत धाम चले जाते हैं जहां से हम आए हैं। तो वही यहाँ पर देवता लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आप ही हमें दिशा दीजिए, आप ही हमें ज्ञान दीजिए। और इसी तरह कोई भी मनुष्य है, एक
गुरु के द्वारा दिशा और ज्ञान दिए जाने पर वो भी इन देवता लोगों की तरह भगवान की सेवा में लग सकता है। तो यहाँ पर आप ये अध्याय हमारा समाप्त होता है, 5वां अध्याय। और अब हम अगले सत्र में 6ठे अध्याय में जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ ताकि सब तक ये ज्ञान पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।